જે એક આઈપીઓ નેક્સ્ટ વીક આવશે 3 ડિસેમ્બરના જે ખુલશે છે એક્વિસ લિમિટેડનો આઈપીઓ અને અહીંયા પણ 3 થી 5 ડિસેમ્બર સુધીની આઈપીઓની ડેટ છે. ફેસ વેલ્યુ 10 પર શેર છે. પ્રાઇસ પણ 118 124 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે અને લોટ સાઇઝ 120 કાઉન્ટરની છે અને 2000માં કંપની સ્થાપના થઈ હતી ને એક એરોસ્પેસ સેગમેન્ટની આ એક કંપની છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું એક્વિસ लिमिटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ अरविंद मेलिगरी आपके साथ जुड़ाए गए हैं. सर बहुत स्वागत है आपका. और पहले तो अगर आपकी कंपनी के बारे में आपके बिजनेस में के बारे में अगर हमें बता सके तो आप. Thank you. Aequs is a foremost vertically integrated engineering-led precision manufacturing ecosystem focused on aerospace industry. And we have been in manufacturing industry, precision manufacturing industry since 15 years. We have been developing aerospace components vertically integrated. Today we have able to develop 100% in-country value-add products to ship it to customer. We have customers like Airbus, Boeing, Safran, Collins working with us, and they have benefited from this whole ecosystem what we have built, and we are able to deliver this to, completely from India. And also we have operations outside India, in France and US also, and customers do activities from there where we supply to them. And apart from the aerospace industry, we are also building a consumer-led, basically focused on consumer electronics, the ecosystem. So that's the second vertical we have in the business. So we are a diversified manufacturing, precision engineering manufacturing company, and we are bringing more capabilities to our customers out of India, and majority of our work has been exports, and we continues to be exports. So sir, आपका जो प्रपोर्शन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स है आप कैसे यूज़ करोगे? कितना डेट रिपेमेंट में जाएगा, कितना एक्सपेंशन वर्सेस एक्विजिशन में जाएगा? अगर आप हमें ब्रेकअप दे सके तो. Majority of our the raise, what we are doing from the IPO primary raise is going towards the debt repayment. 500 odd crore is going towards that, and and then remaining is going towards the investment into new capital investment for the aerospace industry, aerospace manufacturing, precision manufacturing, and some portion is for general corporate purpose and investment into some partnerships and joint ventures. We continue to expand and bring more capabilities to India. जी, अगर हम समझना चाहें कि कितनी स्टेबल है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है विथ मेजर ओईएम्स कस्टमर्स, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या एक पर ऑर्डर है कि डिमांड बेस पे होते हैं, और रिस्क ऑफ ऑर्डर रिडक्शन और कैंसिलेशन कितना होता है? If you really look at how aerospace industry works, is predominantly most of the parts we do carry out is either single sourced or dual sourced with us, and a majority of parts being single sourced. And typically the contracts are 5 to 7 years, and basically will be the assigned supplier who deliver these parts. And we don't see any problem in, as long as we are delivering to them, they're happy to take it, because if you look at the industry overall, global industry perspective, it's a very constrained supply right now, and we are in a very sweet spot to be able to deliver the customers the capacity and capability what we have brought up to deliver high in-country value add and precision manufacturing. And it's a unique ecosystem that we have built in India to support the customer needs. And so it's contractually it's a 5 to 7 year. We're able to continue to do that, and they continue to take this as the order books increases. It comes back to us also. Same way it increases the volumes for us. सर, दूसरा जो पूछना चाहूँगी कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ इन पाइपलाइन फोर्सी आप कर रहे हैं कि कुछ आप आगे जाके कोई एक्विजिशन करेंगे सो दैट आपकी ग्रोथ को एक एक्सेलरेशन मिले, मे बी डोमेस्टिक और ग्लोबली, कुछ आप सोच रहे हैं, और कौन सी टाइप की कंपनीज और कैपेबिलिटीज़ आप टारगेट करेंगे इफ़ यस? We're really not looking at acquisitions for the growth perspective. We already have an operation in France and US. They did come from the acquisitions back in 2015 and 2016, and we have brought them for capabilities or customer acquisition. With this capability, we are able to support global customers and also capability perspective, all the way from aerostructures, aero engines, and aero systems, and a landing gear. We have full capability, breadth of capability that customer can buy from us as a single supplier.
So that's a uniquely, we are qualified to do that across the world, deliver it to them. अगर हम ग्लोबली देखें और जो पैटर्न हमने देखा है सर, दैट जो भी एरोस्पेस कंपनीज है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है वो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, एक्वस कैसे डिफरेंट है और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप आगे जाके? ये हम जो बिल्ड किया है इकोसिस्टम, वो 15 बरस लिया है हमें बिल्ड करने के लिए। इसमें हाई फोर्जिंग, मशीनिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, इसके साथ काफ़ी सारे कैपेबिलिटीज़ और अप्रूवल्स, कस्टमर अप्रूवल्स है। इसके लिए ये बनाने के लिए बहुत साल लगेगा। ये कैपेबिलिटी उसलिए बोल रहा है, हमें जो कस्टमर एक्विजिशन होता वो 1-2 बरस होता है एक बार, एक सर्टन टाइम्स क्वालिफिकेशन होता, एक 3-4 बरस होता क्वालिफिकेशन के लिए। सो ए वेरी लॉन्ग टर्म स्लो अप्रूवल प्रोसेस होता है। सो इसलिए जब कस्टमर आता, अप्रूवल करता है, उसके साथ दे वांट टू डू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट दे डोंट नीड टू गो एंड डू अनदर प्लेस। सो जब जैसा ऐसा होता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी 5 से 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता, कभी भी हम एरोस्पेस से करते हैं। सो उसके साथ हमारा कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा टाइम लगता जब इनिशियली लाने के लिए, बट एक बार आने के बाद वो कंटिन्यूली रहता हमारे साथ। So 15 years they have been with us like Airbus. We continue to grow with them every year. So that's how the relationship get built and continue to grow. And when हम 5,000 यूनिक पार्ट्स करते हैं एरोस्पेस में, वो करने में नया डेवलपमेंट करना है तो it takes a lot of time. So that's the reason why we feel we are very confident that we are uniquely positioned to continue to grow these customers and continue to train work we have. जैसे कि गिवन आपके ग्लोबल ऑपरेशंस है, ग्लोबल कस्टमर्स है, आप सप्लाई चेन कैसे और सप्लाई चेन के रिस्क कैसे मेंटेन करते हो, बीट रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के प्राइस फ्लक्चुएशन, करेंसी रिस्क कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? If you really look at it, aerospace is a very complicated manufacturing process, especially precision manufacturing side. जो करते हैं अभी 5,000 parts, वो 5,000 parts actually 122 different materials से होता है। एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, टाइटेनियम हो, इंकोनल हो, ये सब मटेरियल यूज़ होता है। इनिशियल 122 डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वो होता, बाद में उसके साथ 195 डिफरेंट यूनिक सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। ये करने के कॉम्बिनेशन के बाद हम कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। सो ये जो मटेरियल है 122, उसमें खाली एक मटेरियल इंडिया में डेवलप किया है हम अभी तक। उसके साथ remaining all material is globally procured, and a lot of time customer works with us, we work with customer to see, make sure that it's the right supplier is chosen, and customer contracts भी होता है उनके साथ, मिल्स के साथ। जो प्राइस फिक्स हो जाता वो प्राइस पे हम खरीदते हैं। जो भी फ्लक्चुएशन होता है, जैसा यूक्रेन रशिया वार शुरू हुआ, तब हम टाइटेनियम मटेरियल रशिया काफ़ी शिप करता था। उसके साथ हम डी-रिस्क करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी खरीदा एक ही बार में। होता है ऐसा एक बार, कस्टमर सपोर्ट करते हैं इन सिचुएशन में। और बिकॉज अल्टीमेटली the supply demand of the aircraft is very high, so they want to make sure that they secure the supply as best as possible, without impacting the overall supply chain cost. But ultimately customer will end up bearing most of the supply chain inefficiencies if they have to buy from a different location or different thing. So it's very important that to see that the customer ultimately wants to deliver the products to their customers. जी सर, हाँ, ऑन दैट नोट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा डिटेल से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इशू जो नेक्स्ट वीक ओपन होगा। एक हेड्स अप वापस मैं दे देती हूँ, इशू कोर्स से 3 डिसेम्बरे 5 डिसेम्बर સુધી તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો એક્વસ લિમિટેડના IPOમાં. પણ એ સાથે